Assalamu alaikum dear students. In this video, we are going to discuss reading comprehension. Comprehension means understanding. Reading comprehension questions test your ability to understand the idea which is given in a paragraph. One can understand language as the art of concealing thought. Only an attentive reader can understand or reveal the meanings which have been communicated through a sentence. In reading comprehension, we see two types of questions. The basic test your ability to comprehend a paragraph with multiple choice questions, while the advanced one gives you questions and demands answers which you have to derive from the paragraph that is provided. If you're only reading a paragraph superficially, you won't be able to understand it in depth. Most of the students can be seen struggling with reading. They have to read the same paragraph time and again, yet they remain unable to grasp the main idea. So here are some tips. Read the paragraph carefully and try to find subject in different sentences. Finding subject will enable you to keep track of the ideas which are given in the paragraph. Read all the questions carefully, and if there is a question that you can't understand, don't waste your time on it. बाज़ एक सवाल पहली दफ़ा देखें तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसे दोबारा देखें या थोड़ी देर के बाद देखें तो फिर वो आसान लगने लगता है. पहले उन सवालों के जवाब दें जो आपको समझ में आ रहे हैं और फिर वो सवाल देखें जो कि आपको समझ में नहीं आया. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में याद रखिएगा कि जिस तरतीब में पैराग्राफ में आइडियाज़ दिए जाते हैं, सवाल भी उसी तरतीब से पूछे जाते हैं, और जब आपको जवाब ढूंढना हो तो जवाब भी आपको उसी तरतीब से मिलेगा जिस तरतीब से पैराग्राफ के अंदर जुमलों को ऑर्गेनाइज किया गया है. जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो कुछ लफ्ज़ हैं जिन पे आपने ध्यान देना है, जैसे ऑल, नन, नेवर, ऑलवेज, फॉरएवर, लीस्ट, ऑन दी अदर हैंड. इस तरह के जो अल्फाज आए उनको बहुत ध्यान से देखें, और फिर जब आप सवाल को पढ़ें तो फिर देखें कि कहीं राइटर ने इन अल्फाज को ट्विस्ट तो नहीं किया. ऐसा तो नहीं हुआ कि पैराग्राफ में ऑल लिखा था और क्वेश्चन में नन लिखा है. तो जब आप तवज्जो देके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से सवालों का जवाब मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू मास्टर अ स्किल, attempt it, practice it as many times as you can, and you will become an expert at it. So let's go through a passage and later you can attempt the task that I have shared on my Facebook page. We are going to read the paragraph and we will be looking for subject in each sentence. The forest itself evokes memories of Tarzan. It is green and cool. So आप ये देखें कि यहाँ पे it आया है, ये इट आया है फॉरेस्ट के लिए, तो फॉरेस्ट इज ग्रीन एंड कूल. अमंग इट्स ट्रीज द मैग्निफिसेंट फिग्स एंड अफ्रीकन महागनीज आर टॉलर देन इंग्लिश ओक्स एंड बीचेस एंड फार मोर लग्जूरियंट. द मैग्निफिसेंट फिग्स एंड अफ्रीकन महागनीज. द savannah just beyond the forest grows many kinds of acacia. Near the lower part of the escarpment, one tree dominates by size and stature, the baobab. Several African tribes believe that baobab is the home of the night spirits. One legend declares that God was angry with the tree and planted it upside down. Its trunk is bulbous and its branches do have an upside down look. Baobabs are soft-tissued, fleshy, and frequently full of holes excavated by birds and small mammals. They support and offer temporary homes to bats that help to pollinate their ghostly white blossoms. हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम सवालों को देखते हैं. What are African mahoganies? अच्छा, अब ये हो सकता है कि मुझे पता हो कि महागनी क्या है, लेकिन मैंने पैराग्राफ में क्या पढ़ा है मुझे उससे देखना है कि महागनी क्या है. सो यहाँ पे लिखा था अफ्रीकन महागनीज. अमंग इट्स ट्रीज
The magnificent figs and mahoganies are taller than English oaks and beeches and far more luxuriant. अब आप देखें among its trees, किसके trees? Forest के trees. तो figs क्या हैं, mahoganies क्या हैं, oaks क्या हैं और beeches क्या हैं? These are trees. What are African mahoganies? A tree. Which of the following sentences are true? English oaks are more luxuriant than figs. ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि इंग्लिश ओक्स ज्यादा अच्छी नहीं है बल्कि फिग्स ज्यादा अच्छे हैं. इंग्लिश बीचेस आर टॉलर देन महागनीज. ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि figs and mahoganies are taller than these. So this statement is wrong. Magnificent figs are more luxuriant than the oaks. Green and cool evokes memories of Tarzan. अब ये green and cool क्या था? It was the forest. So green and cool evokes memories of Tarzan. It's also wrong. अभी आपने देखा होगा कि मैं जब सवाल का जवाब ढूंढ रही थी तो मैं उसी जगह पे घूम रही हूँ जहाँ पे मेरा पहला और दूसरा सवाल था. मैंने ये नहीं किया कि मैं पूरे पैराग्राफ में ढूंढती फिरूं कि बात कहाँ पर हो रही है क्योंकि सवाल जो है वो तरतीब के साथ पूछे जाएंगे. African tribes have made legends about what? Baobab, goat, night spirit, upside down tree. They have made legends about baobab. और यहाँ पे लिखा हुआ था कि several African tribes believe. So they believe, tribes believe. One legend declares. तो ये legends की बात हो रही है. Which tree has been most frequently used by birds and animals? Figs. तो figs की दफा में तो कोई बात ही नहीं हुई थी birds की. Acacia. Acacia, the savanna just beyond the forest grows many kind of acacia. Near the lower part of escarpment, one tree dominates by size and stature. तो यहाँ पे तो acacia की बात तफसील से हुई नहीं. महागिनी भी पहले था लेकिन यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है. बचा baobab. और यहाँ पे इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं तो वो आप देख लीजिएगा. Where do the bats live? अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास आया था बैट्स के बारे में जुमला. They support and offer temporary homes to bats. They. Baobab. So where do the bats live? Caves, Africa, trees, baobabs. अब आप ये देखें कि हम हो सकता है कि हमारी प्रीवियस नॉलेज हो कि वो केव्स में रहती हैं लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं या हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो हमारा जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, हमारी प्रीवियस नॉलेज नहीं है. हमसे पूछा जा रहा है कि पैराग्राफ के मुताबिक बताएं कि बैट्स जो हैं वो कहाँ रहती हैं. तो वो बायोवेब में रहती हैं. और ये आपने नहीं सोचना कि 3 सवाल आए हैं और तीनों का जवाब सेम है, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपने ये देखना है कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो पैराग्राफ के किस हिस्से में है. और ऐसा तो नहीं है कि आपको ट्रिक किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि बात जैसे यहाँ पे लिखा था आर टॉलर देन दिस, तो जब आर टॉलर देन, आर शॉर्टर देन, ऑल, नन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. और आप देखें कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा पैराग्राफ पढ़ के उसके जवाब ढूंढने में, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ का हुजम ज़्यादा होता है और जब हम उसे देखते हैं और हमें ये पता है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, हमें जल्दी पड़ी होती है तो फिर हम पैराग्राफ को पढ़ने पे ध्यान नहीं देते. तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी है और अपनी नर्व्स को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप तवज्जो के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकें. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.